सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी ने यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में भारत सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। ट्विटर के पूर्व सीईओ ने भारत में हुए कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन के दौरान सरकार पर आरोप लगाया कि भारत सरकार की तरफ से उन पर दबाव बनाया गया था कि ट्विटर को भारत में बंद करने की धमकी दी गई थी। आपको बता दें कि यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग पॉइंट्स ने हाल ही में ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी का इंटरव्यू किया। इस दौरान उनसे कई सवाल पूछे गए, जिसमें से एक सवाल ये भी था, क्या कभी उन पर किसी देश की सरकार की ओर से कोई दबाव बनाया गया? तो इसके जवाब में उन्होंने भारत सरकार का उदाहरण देते हुए कहा, भारत में किसान आंदोलन के दौरान सरकार की ओर से उनके कर्मचारियों को घरों पर छापेमारी की बात कही गई थी। साथ ही नियमों का पालन न करने की दिशा में ट्विटर के कार्यालय को भी बंद करने की धमकी दी गई थी। वहीं ट्विटर के पूर्व सीईओ के इन आरोपों को भारत सरकार की ओर से झूठा और बेबुनियाद बताया गया। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, ये जैक डोर्सी का एक झूठ है। वो और उनकी टीम बार बार भारतीय कानून का उल्लंघन कर रहे थे। उनका मानना था कि उन्हें भारतीय कानून का पालन नहीं करना है, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई उन्होंने अपने नियम बनाए, जबकि भारत सरकार शुरू से ही देश में काम करने वाली सभी कंपनियों के लिए स्पष्ट है कि उन्हें भारत में भारतीय कानून का पालन करना होगा। No, look, I have already tweeted early morning on this statement by Jack Dorsey. Jack Dorsey was the CEO of Twitter during a very, very dubious period in Twitter's history. What he has said is an outright lie, and I have said that publicly, and I'm reiterating it again. Twitter is a company that believed that it was not necessary for it to comply with Indian law. It believed that it did not have to comply with Indian law and made up its rules as it went along. And the government of India has been very clear from the very beginning, for all companies that operate in India, they have to always comply with Indian law. That is point number one. Point number two, I just want to refresh Jack Dorsey's memory and certainly all your viewers that between 2020 and 2022, Twitter was violating Indian law multiple times, and it was in non-compliance several times during those two years, and it started complying only in June 2022. During that entire period, nobody went to jail, nobody was raided, and so Jack Dorsey, knowing fully well that Twitter did not comply with Indian law and did not face any consequence of that, is today lying and making up this story about raids and arrests. Third point, that Twitter now, it is there now in public domain that Twitter during this period was not only partisan, was behaving in an absolutely arbitrary manner, and the Twitter files that have then come out after Jack Dorsey sold Twitter has exposed Twitter to be a platform that abused its power, misused its power, and de-amplified many people, as in muted their voices, de-platformed many people, as in permanently took them off Twitter, totally in violation of Article 14 and Article 19 of our Constitution. And they did this in India, they did this in the US, and this information is now available in the public domain for everybody to read and see. And therefore, we have always maintained, the government of India has always maintained that our objectives are to ensure that the internet is safe and trusted, that every intermediary like Twitter, foreign or Indian, big or small, must be always compliant with Indian law. And our laws have very clear provisions about weaponizing of misinformation, which is what Twitter did during the entire period of 2020, where they weaponized misinformation against the Indians and the government of India, and therefore they were exposed. So therefore, today for Jack Dorsey to suddenly wake up from his slumber and to try and rebrush the history of Twitter's conduct, and so far without any consequences, is to essentially say what I said in my tweet, that it is a total outright lie. जैक डोर्सी ने भारत के अलावा तुर्की पर भी इस तरह के आरोप लगाए हैं। इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि तुर्की में भी सरकार की तरफ से ट्विटर को उनके देश में बंद करने की धमकी दी गई थी, जबकि वहां पर कंपनी ने सरकार के खिलाफ कई मुकदमे लड़े और उन्हें जीता भी। फिलहाल भारत में सरकार ने जैक डोर्सी को उन सभी आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया है, जिसमें उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान सरकार पर ट्विटर को बंद करने की धमकी देने जैसा गंभीर आरोप लगाया है।
केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का इस पूरे मामले पर साफ कहना है कि जैक डोर्सी के नेतृत्व में ट्विटर भारतीय कानून का उल्लंघन कर रहा था। उन्होंने कहा कि ट्विटर गलत सूचनाओं को हथियार बनाने में मदद कर रहा था, जबकि भारत में इस तरह की सभी एक्टिव कंपनियों के लिए सरकार की नीति स्पष्ट है। इंटरनेट सुरक्षित और भरोसेमंद जवाबदेह ये सुनिश्चित करने के लिए कानून का पालन हो। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।